गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टॉपिक आपकी पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो नो कॉन्फिडेंस या इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन लाना चाहती हैं राज्यसभा चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट। तो वाइस प्रेसिडेंट का अगर हम ऑफिस देखें, सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है आफ्टर प्रेसिडेंट। एलिजिबिलिटी क्या होती है कि सिटीजन होने चाहिए, 35 साल तक मिनिमम एज होनी चाहिए, राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई होने चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उन्होंने नहीं होल्ड किया होना चाहिए, तभी वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो उनके इलेक्शन के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें जितने भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हों चाहे नॉमिनेटेड मेंबर्स हों। याद रखो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो 5 साल का टर्म होता है, री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल होते हैं। इनको रिमूव किया जा सकता है इफेक्टिव मेजॉरिटी से राज्यसभा की, और एक सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा जो है वो अगर एग्री कर जाए तो उसके बाद। ठीक है, तो ये राज्यसभा के सेशंस को प्रिजाइड करते हैं, वोट नहीं करते जब तक टाई ना हो जाए। अपने फंक्शंस जो है वो एज अ प्रेसिडेंट भी डिस्चार्ज करते हैं जब प्रेसिडेंट एब्सेंट हो तो इनको रिमूव किया जा सकता है मेजॉरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स इन द राज्यसभा, और एग्रीमेंट अगर लोकसभा ने भी किया हो सिंपल मेजॉरिटी के साथ, और लगभग 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ता है इस रेजोल्यूशन को मूव करने से पहले। तो रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक तरह से जो है ऑपोजिशन पार्टीज चाह रही हैं कि वो रेजोल्यूशन लेकर आएँ। ठीक है, आज तक कभी जो है कोई ऐसा इम्पीचमेंट या नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन अगेंस्ट राज्यसभा चेयरमैन जो है वो अभी तक पास नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रिफॉर्म्स इन मर्चेंट शिपिंग। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 और कोस्टल शिपिंग बिल 2024 जो है उससे ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लेके आए जा सके शिपिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, तो क्यों ज़रूरत है इस बिल की, इन बिल्स की? क्योंकि अभी सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी गैप्स एग्जिस्ट करते हैं, खासकर वेसल्स जो कि ऑपरेट कर रहे हैं ऑफशोर सेक्टर में। वो लगभग 50% ऑफ इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं। तो मैरीटाइम ट्रेनिंग जो है उसको भी लिबरलाइज़ करने की ज़रूरत है, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन आ चुकी है ऑलरेडी, लेकिन अभी तक कोई लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता जो इन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करे इफेक्टिवली। ठीक है, एग्जिस्टिंग एक्ट जो है वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोविजंस नहीं रखते हैं। तो लाइसेंस एरा प्रोविजंस की वजह से जो है मॉडर्नाइजेशन जो शिपिंग इंडस्ट्री में होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग एक्ट रेगुलेट करता है सिर्फ लार्ज मैकेनाइज्ड शिप्स को, तो स्मॉल और जो है नॉन मैकेनाइज्ड वेसल्स होते हैं वो अनरेगुलेटेड रहते हैं। लेकिन इस न्यू बिल में जो है प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा रहा है। डेफिनेशन ऑफ वेसल्स जो है उसको ब्रॉड बनाया जा रहा है। ठीक है, ओनरशिप थ्रेशोल्ड जो चाहिए होती है इंडियन एंटिटीज़ को ऑपरेट करने के लिए 100% से उसको कम करके 51% किया जा रहा है, ताकि इवन एनआरआईज़ या ओसीआईज़ जो हैं या फॉरेन एंटिटीज़ हैं वो भी इंडियन ओनरशिप जो है वो मेंटेन करके अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। ठीक है, अब और भी इसमें प्रोविजंस है, जैसे इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग सेंटर बन चुका है आफ्टर बांग्लादेश। लेकिन चैलेंजेस ये हैं कि वेसल्स जो है डिमोलिशन के लिए उसकी रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं होती है। तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का जो है प्रोविज़न इन वेसल्स का इंडिया जो है मर्चेंट शिपिंग बिल में लेकर आया जा रहा है। ठीक है, न्यू बिल जो है वो रेगुलर अथॉरिटीज़ को ये भी एम्पावर करेगा कि सभी तरह की वेसल टाइप्स को वो इंस्ट्रक्शन दे सके, ताकि कोस्टल सिक्योरिटी और इंडिया के कोस्ट लाइन को भी सेफ गार्ड किया जा सके। सल्फ़र कंटेंट जो मरीन फ्यूल में होता है उसको कम करके 0.5% से भी कम करने का कहा जा रहा है। फिर बैन लगाया जा रहा है सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स पर इंडियन शिप्स में। ठीक है, और इंटरनेशनल कन्वेंशन जैसे मारपॉल या फिर रैक रिमूवल कन्वेंशन, इनको भी फुली इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है इस बिल के थ्रू। ठीक है, तो ये न्यू बिल जो है वो वेलफेयर और सेफ्टी प्रोविजंस जो हैं सी फेयरर्स के, जो उनके लेबर राइट्स होते हैं उनको भी जो है वो इन्फोर्स कर रहे हैं, खासकर मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन के। ठीक है, प्रपोज्ड बिल में क्लियर लीगल प्रोविजंस भी डाले जा रहे हैं रेगुलेट करने के लिए मैरीटाइम ट्रेनिंग को। तो गवर्नमेंट ने टेक्निकल रेगुलेशन ऑफ शिप्स जो है वो कमर्शियल यूज़ ऑफ इंडियन कोस्टल वाटर्स से सेपरेट कर दिया है, और न्यू बिल जो है गवर्नमेंट के सागरमाला प्रोग्राम को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिवाइज किए हैं प्राइजेस फूड आइटम्स के, जो कि प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंदर चिल्ड्रन को दिए जाते हैं। तो बेसिकली मिड डे मील स्कीम जो है उसका नाम 2021 में करके जो है वो रिप्लेस करके
प्रधानमंत्री पोषण स्कीम किया गया। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना चाहती है, एनहेंस करना चाहती है स्कूल पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स की। इसमें 1 हॉट कुक्ड मील दी जाती है स्टूडेंट्स को जो बाल वाटिका में पढ़ रहे हैं और क्लासेस 1 से लेकर 8 तक हैं गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, ताकि न्यूट्रिशनल स्टेटस उनका इम्प्रूव किया जा सके। पुअर चिल्ड्रन को अटेंड करने के लिए स्कूल जो है वो इनकरेज किया जा सके। न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है वो चिल्ड्रन को एलिमेंट्री स्टेज में दिया जा सके, खासकर ड्रॉट अफेक्टेड या फिर डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज़ में ड्यूरिंग समर वेकेशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो मटेरियल कॉस्ट है उसके प्राइजेस जो है वो 13.7% जो है वो रिवाइज कर दिए हैं, इंक्रीज कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल पंचायत अवार्ड्स। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल पंचायत अवार्ड्स जो हैं वो दिए जाने वाले हैं। अब ये अवार्ड जो है रिकग्नाइज करते हैं पंचायत के रोल पॉवर्टी एलिविएशन, हेल्थ, चाइल्ड वेलफेयर, वाटर कंजर्वेशन, सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस और वुमेन एम्पावरमेंट में। तो इन अवार्ड्स को रिवैम्प किया गया था 2022 में और रीलॉन्च किया गया था। ठीक है, ताकि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो पंचायत और जो है के बीच में वो प्रमोट की जा सके। ठीक है, तो उनके लिए 9 लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो थीम्स पर ये अवार्ड्स जो है डिसाइड किए जाते हैं। तो इसमें भी जो है 2 मेजर कैटेगरीज हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार जो टॉप 3 रैंकिंग ग्राम पंचायत से इक्विवेलेंट बॉडीज़ को दिया जाता है उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। फिर नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार भी है जो टॉप 3 ग्राम, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट पंचायत को दिया जाता है। अब कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स भी हैं जो रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की अडॉप्शन यूसेज के लिए भी दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वोरोनिज रडार। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है वो $4 बिलियन का डिफेंस एग्रीमेंट रशिया के साथ करने वाला है ताकि एक्वायर कर सके रशिया के वोरोनिज बैलिस्टिक मिसाइल अटैक अर्ली वार्निंग रडार को, जो कि एक क्रिटिकल कंपोनेंट है रशिया के अर्ली वार्निंग और मिसाइल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये केपेबल है आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रैक करने के लिए रेंज ऑफ थ्रेट्स इंक्लूडिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स और एंड एयरक्राफ्ट, जिससे कि जो थ्रेड्स को लगभग 8,000 किलोमीटर के डिस्टेंस से ही जो है वो एक तरह से इंटरसेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रडार्स जो हैं वो स्ट्रेटजिकली डिप्लॉय किए गए हैं अक्रॉस रशिया और इसमें फेज्ड अरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जिससे कि ये हाईली एफिशिएंट बनते हैं, लेस मैकेनिकली कॉम्प्लेक्स बनते हैं दैन ओल्डर सिस्टम्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अमृत ज्ञान कोश पोर्टल। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सोनल जो है उन्होंने अमृत ज्ञान कोश पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है, जो कि जिसको जॉइंटली डेवलप किया गया है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन और कर्मयोगी भारत द्वारा, ताकि सेल्फ रिलायंस गवर्नेंस ट्रेनिंग में और जो है वो लाई जा सके और स्ट्रेंथन की जा सके गवर्नेंस ट्रेनिंग को। तो इसको डेवलप किया गया है आई गॉट प्लेटफॉर्म के ऊपर ही, और ये 15 ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जो है वो गवर्नेंस को अलाइन कर रहा है। ठीक है, तो कर्मयोगी भारत क्या है? एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जो कि की पिलर है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का, जो कि आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जो है ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बीमा सखी योजना। टॉपिक सोशल इश्यूज और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली बीमा सखी योजना जो है वो हरियाणा के पानीपत से लॉन्च की है, जिसमें कि जो ये इनिशिएटिव है एलआईसी का, जिसमें कि विमेन जो है 18 से 70 साल के बीच जिन्होंने क्लास 10th पास की है उनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाता है पहले 3 साल, ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी और इंश्योरेंस अवेयरनेस वो कंट्री वाइड प्रमोट कर सकें। एक तरह से उनको आफ्टर ट्रेनिंग एलआईसी एजेंट्स भी बना दिया जाएगा। ठीक है, तो 7,000 रुपये महीना पहले साल में, उसके बाद 6,000, फिर तीसरे साल में 5,000 रुपये जो है वो उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा और उनको कमीशन भी मिलेगा इसके लिए पहले साल में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जी टाउ ए सिस्टम। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली रिसर्चर्स जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के, उन्होंने जो है एक यूनिक ट्रिपल स्टार सिस्टम जिसका नाम है जी टाउ ए, उसको जो है वो एक तरह से स्टडी किया है। तो ये एक यूनिक ट्रिपल स्टार सिस्टम है जो कि लगभग 489 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ है। तो ये काफ़ी यंग है, लगभग सिर्फ 1 to 5 मिलियन ईयर्स ओल्ड ही है। और इन स्टार्स के आसपास एक डिस्क है जो कि मेड ऑफ गैस एंड डस्ट है। यहीं पर वो एरिया होता है जहाँ पर प्लैनेट्स जो हैं वो बनने शुरू होते हैं। तो जी टाउ ए एक परफेक्ट सिस्टम बन जाता है हमारे लिए स्टडी करने के लिए कि कैसे
प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं एक कॉम्प्लिकेटेड मल्टी स्टार एनवायरनमेंट में। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सुबारू टेलीस्कोप। ये टॉपिक भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुबारू टेलीस्कोप ने रिसेंटली एक पेयर ऑफ इंटरेक्टिंग गैलेक्सीज को कैप्चर किया है। तो सुबारू टेलीस्कोप एक जापानीज 8.2 मीटर ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जो कि लोकेटेड है डॉर्मेंट वॉल्केनो मौना किया पर, जो कि हवाई में लोकेटेड है। इसको ऑपरेट कौन करता है? नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ जापान। सुबारू टेलीस्कोप जो है उसने कई तरह की सेलेस्टियल बॉडीज़ को ऑब्जर्व किया है फ्रॉम नियर बाय शूटिंग स्टार्स टू गैलेक्सीज, जो कि 13.1 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Vice President of India. This topic is important for your polity section. So opposition parties under the India bloc are planning to submit a no confidence or impeachment resolution against Rajya Sabha chairperson and the Vice President of India. So what is the office of Vice President of India? So it is the second highest constitutional office after the President of India, and this office is modeled on the lines of the American Vice President. And what is the eligibility criteria to be a Vice President in India? So you must be a citizen of India. You must be at least 35 years of age. You must be qualified to be elected as a member of Rajya Sabha, and you cannot hold any office of profit under the government of India or any other state government. Okay. So how does the election take place? So and the election is done by an electoral college which consists of the members of both houses of parliament, and it is done through a system of proportional representation. So this the membership of the electoral college consists of both elected and nominated members of the parliament. But remember, the members of the state legislative assemblies do not participate in the election of vice president. Okay, unlike the president of India. So the vice president holds office for a term of 5 years, and he is eligible for re-election also. He can be removed by a resolution which is passed by an effective majority of the Rajya Sabha and simply agreed upon by the Lok Sabha through a simple majority. Okay, so what are the roles, responsibilities, and powers? So he presides over the Rajya Sabha sessions and ensures smooth proceedings of the session of the House. He does not vote in the Rajya Sabha at first, but he can vote to break a tie. He discharges the functions of the president in case of the absence of president. Okay, so he can be removed by a resolution passed by the majority of members of Rajya Sabha and agreed upon by the Lok Sabha with a simple majority. But it must require at least 14 days notice before removing this resolution. Okay, before moving this resolution. So this move that the India bloc has done is meant to uh, give a political message only, because the removal of vice president would not be happening because the alliance lacks majority in the Rajya Sabha and also in the Lok Sabha. But we do not have any precedent for moving any impeachment or no confidence motion against the Rajya Sabha chairperson as of now in India's constitutional history. So the next topic is reforms in merchant shipping. This topic is important for your economy section. So the government of India is planning to introduce the merchant shipping bill and coastal shipping bill to drive reforms and bring transformative changes in the shipping industry. So what is the need of such a bill? So significant regulatory gaps exist, particularly for vessels which operate in the offshore sector, comprising nearly 50% of the Indian flagged vessels. Also, maritime training was liberalized, allowing the private sector participation, but we still do not have any legal framework in the existing act to regulate their activities effectively. The existing act also lacks enabling provisions for implementing the international conventions signed or planned by India. There are we still have license era provisions which hinder the modernization of the shipping industry. Okay, so to deal with all these situations, these bills have been proposed. So what are the features of the merchant shipping bill? So the existing act regulates only the large mechanized ships, leaving the smaller and non-mechanized ones unregulated, which creates operational and safety risks in the offshore sector. But this new bill is going to address this by expanding the definition of vessels to include a wide range of crafts, okay, like submersibles, hydrofoils, mobile offshore units, etc.
It also lowers the ownership threshold for Indian entities from 100% currently to 51%, so that NRIs, OCIs, and even foreign entities can invest while maintaining the majority of Indian ownership in the shipping industry. Okay. So India is also has become the second largest ship recycling center after Bangladesh, but it faces challenges in registering vessels for demolition, as they are often deemed unseaworthy. So this bill also introduces provisions for temporary registration of such vessels, so as to boost the recycling hubs like along in India. Okay, the new bill also empowers the authorities to issue instructions to all vessel types, enhancing coastal security and safeguarding India's coastline. So, with respect to marine pollution measures, this bill aims to reduce the sulfur content in marine fuel to less than 0.5%. It is also seeking ban on the single-use plastics on Indian ships. This new bill also fully incorporates the international conventions like the MARPOL and the Wreck Removal Convention. This new bill also addresses gaps in the welfare and safety provisions of the seafarers by incorporating the important provisions of the Maritime Labour Convention. The bill also introduces clear legal provisions to regulate maritime training as well. Okay. So government has also now separated the technical regulations of the ship from the commercial use of Indian coastal water, and this new bill is also going to support the government's Sagarmala program. Okay. So the next topic is Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman Scheme. This topic is important for your governance and social issues. So recently, central government has revised the prices of food items which are provided to children under the Pradhan Mantri Poshan Yojana. So basically, this is nothing but the midday meal scheme which existed before 2021, after which it was replaced as the or renamed as the Pradhan Mantri Poshan Scheme. So it's a centrally sponsored scheme which aims to provide nutritional support and enhancing school participation of students. Under the scheme, one hot cooked meal is provided to students in Balvatika and classes 1 to 8 in government and government aided schools on all school days. The aim of the scheme is to improve the nutritional status of eligible children and encourage young poor children to attend schools more regularly. It also aims to provide nutritional support to children of elementary stage in drought affected and disaster affected areas even during summer vacation. Okay. So government has basically revised the prices and increased the rather enhance the material cost of the items under the PM Poshan basket by 13.7% now. So the next topic is National Panchayat Awards. This topic is important for your governance section. So National Panchayat Awards are going to be conferred in the next few days at Vigyan Bhavan, Delhi. So these awards are aimed to recognize and encourage panchayats for their efforts in poverty alleviation, health, child welfare, water conservation, sanitation, infrastructure, social justice, governance, and women empowerment. So these awards have been revamped and launched during the year 2022, and these awards, the aim is to promote competitive spirit among the uh, gram panchayats in India. Okay, so there are two other categories of awards which are conferred under the National Panchayat Awards. First is the Deen Dayal Upadhyay Panchayat Satat Vikas Puraskar, which is given to top three ranking gram panchayats or equivalent bodies. Then we have this Nanaji Deshmukh Sarvottam Panchayat Satat Vikas Puraskar, which is given to top three gram, block, and district panchayats. Okay, we have special category of awards also with respect to adoption and usage of renewable sources of energy by the panchayats. Okay, so the next topic is Voronezh radar. This topic is important for your security section. So India is set to finalize a landmark $4 billion defense agreement with Russia so as to acquire the Russian Voronezh ballistic missile attack early warning radar. And this Voronezh radar system is a critical component of Russia's early warning and missile defense infrastructure. It is capable of identifying and tracking a range of threats, including ballistic missiles and aircraft, over distances of up to 8,000 kilometers. So these radars are strategically deployed across Russia to provide extensive coverage against potential missile threats. So these missiles or these radars, they employ phased array technology, which is highly efficient and it is less mechanically complex than the older systems.
So the next topic is Amrit Gyan Kosh portal. This topic is important for your governance section. So Union Minister of Personnel has launched this Amrit Gyan Kosh portal, which has been jointly developed by the Capacity Building Commission and Karma Yogi Bharat. So it's a platform to promote self-reliance in governance training and strengthen governance training. So it is developed on the iGOT platform, which serves as a comprehensive repository of best practices in governance and policy implementation. So this platform, this portal will align 15 of the 17 sustainable development goals, covering critical themes like health, education, agriculture, and digital governance. So what is Karma Yogi Bharat? So Karma Yogi Bharat is a special purpose vehicle which forms a key pillar to the institutional framework with an aim to operate the iGOT Karma Yogi platform. Okay. So the next topic is Bima Sakhi Yojana. This topic is important for your economy and your social issues. So PM Modi has recently launched the Bima Sakhi Yojana in Haryana's Panipat. So it's an initiative of the state-owned life insurance corporation. It is designed to empower women aged 18 to 70 years who have passed out of class 10. They will receive specialized training and a stipend for the first 3 years to promote financial literacy and insurance awareness. After training, they can serve as LIC agents as well, and even the graduate Bima Sakhis would have the option to qualify for being considered as the development officers roles in LIC. So women LIC agents will get a stipend of 7,000 for per month for one first year, 6,000 for second year, and 5,000 per month in the third year, and they will also receive commission of 48,000 excluding bonus for the first year. Okay. So the next topic is GG Tau A system. This topic is important for your Science and Tech section. So recently, researchers from the National Institute of Science Education and Research in Odisha have studied a unique triple star system called the GG Tau A. So it's a unique triple star system which is about 489 light years away from Earth. This system is quite young, just about 1 to 5 million years old, and around these stars is a disk made of gas and dust, which is where the planets began to form. So this makes this system a perfect one to study how planets can form in a more complicated multi-star environments. Okay. So the next topic is Subaru telescope. This topic is important for your science and tech section. So Subaru telescope has recently captured a pair of interacting galaxies. So Subaru telescope is a Japanese 8.2 meter optical infrared telescope. It is located on the dormant volcano Mauna Kea, which is located on the island of Hawaii. So it is operated by the National Astronomical Observatory of Japan, and this telescope has observed about various celestial bodies from nearby shooting stars to galaxies, which are located about 13.1 billion light years away from Earth. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.